राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई भून लेंगे इस तरीके से। अब हम आधी चम्मच के बराबर इसमें हल्दी ऐड करेंगे और स्वाद के अनुसार आप पिसी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए डाल रहे हो बना रहे हो तो आप कम ऐड करिएगा। स्वाद के अनुसार नमक और गरम मसाला हम थोड़ा सा
हमें 2-3 बार हाथ से अच्छे से मसलना है आटे को और बस हमें इसकी लोइयाँ छोटी छोटी रेडी कर लेनी है।
और जितनी सुंदर देखने में लग रही हैं उससे ज़्यादा कहीं खाने में लगती हैं ये कचौरियाँ। तो फ्रेंड्स, एक बार तो ट्राई करना बनता है। और हमारे चैनल को अगर आपको ये खस्ता कचौरी की रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए, तोड़ के भी हमने दिखा दी है, अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। इसमें जो हमने मसाले ऐड करे हैं बहुत ही यमी से हैं। ये आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। चाय के साथ भी बहुत ही यमी लगती हैं। आप इसको शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी इनको दे सकते हैं। और आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही यमी लगती हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।